Hello dear students, welcome to my YouTube channel. आज 4th सेमिस्टर पिलांकर जो रही कोर 8, 9 and 10 पेपर से कोर 8 एजुकेशन ऑनर्स पिलांकर कोर 8 पेपर ना हूँ कौन ना हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया तार यूनिट 1 रे कौन कौन रही ना एजुकेशन ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड ता भीतर रही जे फीचर्स ऑफ वैदिक पीरियड विथ स्पेशल रेफरेंस टू एम्स करिकुलम एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। सेकेंड रही फीचर्स ऑफ बुद्धिस्ट पीरियड विथ स्पेशल रेफरेंस टू एम्स करिकुलम एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। थर्ड रही रिलेवेंस ऑफ गुरुकुल सिस्टम एंड बुद्धिस्ट सेंटर्स ऑफ लर्निंग एंड फोर्थ रही एंशिएंट सीट्स ऑफ लर्निंग। तेणु पाने यहाँ यूनिट 1 बछा बछा सर्ट क्वेश्चन जहाँकि तुम परीक्षा इंपोर्टाट तेणु युवा हूँ फिल इन द ब्लांक्स कहले शून्य स्थान पूरण कर एजुकेशन ड्यूरिंग एंशिएंट इंडिया यूनिट 1 प्राचीन जुग रे शिक्षा जो रही तार बछा बछा सर्ट क्वेश्चन तेणु सर्ट क्वेश्चन कहले फिल इन द ब्लांक्स युड़िक पढ़ीदे आम 1 मार्कर क्वेश्चन कर तेणु वीडियो को आरंभ शेष पर्यंत देखिए पिला माने बहुत पिला तो मैंने वीडियो देखुच किंतु सब्सक्राइब करून तेणु जो मैंने चैनल नुआ अच्छे सब्सक्राइब करना तो मैं अनुरोध वीडियोटी को मोर चैनल को सब्सक्राइब करदेव और पिला पाखु तुम सांग पाखु अधिक अधिक सेयार कर सब्सक्राइब करदे कौन हम ना बच्चा जो सब वीडियो करागुक तुम पाखे सहजरे पहुँची पार तेणु तुम आग को जो बीएड एंट्रांस एवं पीजी जो सीपेट दिया सीपेट एंट्रांस क्वेश्चन सब आसीपे ताहले चलो वीडियोटी स्टार्ट करवा। प्रथम क्वेश्चन हूँ कौन ना एंशिएंट इंडिया कवर्स द पीरियड ऑफ नियरली डैश सेंचुरीज तार आंसर हूँ कौन ना 25 एंशिएंट इंडिया कवर्स द पीरियड ऑफ नियरली 25 सेंचुरीज। सेकेंड क्वेश्चन इन एंशिएंट इंडियन लिटरेचर ऑफ द वैदिक पीरियड डैश एंड डैश वर्ड्स फ्रिक्वेंटली अकर तार आंसर हूँ कौन ना शिक्षा एंड अध्यापना। एंशिएंट इंडियन लिटरेचर रे शिक्षा एवं अध्यापना बेसी व्यवहार करा तापर थर्ड क्वेश्चन हूँ कौन ना शिक्षा मीन्स डैश शिक्षार अर्थ कौन ना टू लर्न और टू रिसाइट शिक्षा ग्रहण करवा बा रिसाइट बा आवृत्ति करवा। तापर फोर्थ क्वेश्चन हूँ इन वैदिक पीरियड एजुकेशन कंसिस्टेड ऑफ लर्निंग टू रिसाइट द डैश रिसाइट द होली टेक्स्ट मीन्स जो पवित्र ग्रंथ आमर रही होली टेक्स्ट पढ़ापी से तब इन वैदिक पीरियड रे एजुकेशन कहले होली टेक्स्ट को लर्न करवा। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ द वर्ड अध्यापना मीन्स टू डैश द वर्ड अध्यापना मीन्स डैश तार आंसर हूँ कौन ना टू गो नियर अध्यापना मीन्स टू गो नियर। तब नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ द एंशिएंट इंडियन एजुकेशन एमर्ज्ड फ्रॉम डैश कौथरू आसी ना वेदरू आसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ इन वैदिक पीरियड एजुकेशन डिवाइडेड इनटू डैश काइंड्स ऑफ नॉलेज को केते प्रकार ज्ञान को रे विभक्त कराउतला एजुकेशन को ना दुई भाग रे विभक्त कराउतला डिवाइडेड इनटू 2 काइंड्स ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैदिक पीरियड एजुकेशन वाज डिवाइडेड इनटू डैश एंड डैश काइंड्स ऑफ नॉलेज तार आंसर हूँ दिस वर्ल्डली एंड अदर वर्ल्डली दी भाग विभक्त कराउतला दिस वर्ल्डली एंड अदर वर्ल्डली। परवर्ती प्रश्न कौन दिस वर्ल्डली एजुकेशन डील्स विथ डैश दिस तार आंसर हूँ दिस वर्ल्डली एजुकेशन डील्स विथ द सोशल आस्पेक्ट को अंतर्भुक्त करुला। परवर्ती प्रश्न द अदर वर्ल्डली एजुकेशन इज रिलेटेड विथ डैश क्या अंतर्भुक्त करुला अदर वर्ल्डली ना इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स फॉर अचीविंग साल्वेशन इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स फॉर अचीविंग salvation is the other worldly education is related with. Next question is in Vedic period education was considered as a means of dash from life managers. The answer was emancipation or salvation आम जो कहे मुख्य प्राप्ति। नेक्स्ट हूँ द मेन एम ऑफ वैदिक एजुकेशन वाज डैश द आंसर हूँ ना साल्वेशन द मेन एम ऑफ वैदिक एजुकेशन वाज साल्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ फॉर achieving salvation much emphasis was laid on dash for achieving salvation much emphasis was laid on attention concentration and yoga. Next question is Vedic education was based on dash ideas
Vedic education was based on lofty or high ideas. Next question is the educational institution in the Vedic period was dash. The educational institution in the Vedic period was Gurukulas. Next question is in Gurukulas the students led the life of dash. The answer is Brahmachari. In Gurukulas the students led the life of Brahmachari. Next question is in Vedic system of education learning was almost monopolized by dash. Monopolized by the Brahmins. परवर्ती प्रश्न in Vedic period teaching system was mainly based on dash method, based on oral method বা মৌখিক ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ। परवर्ती प्रश्न students showed their worth through dash and dash. Students showed their worth through reasoning and argumentation. Next question is dash and dash were also held from the time to time to develop the reasoning capacity of the students in Vedic system. कौन सब कराउतिला ना सेमिनार्स एंड सिम्पोजिया स्टूडेंट मानकर रीजनिंग कैपेसिटी डेवलप करने सेमिनार एवं सिम्पोजिया सब कंडक्ट कराउतिला टाइम टू टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द वैदिक पीरियड द पीपल्स वर रिसाइडिंग इन द हाउस ऑफ द डैश कोठी रही पाठ ग्रहण करते शिक्षा ग्रहण करते ना हाउस ऑफ द गुरुज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश वाज द ड्यूटी ऑफ द पीपल्स हु रिसाइडेड इन द हाउसेस ऑफ गुरुज। Answer is to obey the teacher or guruj. Next question is the chief aim of the teacher was dash. The chief aim of the teacher was all-round development of the personality. Next question is in the past the teacher taught relationship was very dash. Teacher to student teacher relationship বা गुरु शिष्य संपर्क कौन थिला ना very cordial and intimate. Next question is the main objective of Vedic education was dash. The answer is to attain salvation through education. शिक्षा माध्यम मुख्य प्रत्यय हवा होची वैदिक एजुकेशन मुख्य लक्ष्य थिला। परवर्ती प्रश्न इन वैदिक एजुकेशन सिस्टम द बिगिनिंग ऑफ एजुकेशन वाज मार्क्ड बाय डैश सेरेमनी। एटा वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन तेणु यहाँ भल भाव में मन रखिथ पे वैदिक एजुकेशन सिस्टम रे जो एजुकेशन आरंभ हुए कौ सेरेमनी रे ना उपनयन। For the Brahmins for Upanayana, the age limit was dash. Age limit was for Brahmins 8 years. Next question is for the Kshatriyas, the age limit was dash years. For Upanayana ceremony, the answer is 11 years. And for the Vaishyas, the age limit was dash. Age limit for Upanayana ceremony was 12 years for the Vaishyas. एगुड़ाक भल भाव में मन रखियो पिला माने यही क्वेश्चन डैश पूर्ण पढ़ी पारे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन हो इन द वैदिक सिस्टम द स्टूडेंटशिप यूजुअली लास्टेड फॉर डैश इयर्स। लास्टेड केते वर्ष रही पाठ ग्रहण करते ना 12 वर्ष रही पढ़ुते। द इन द वैदिक सिस्टम द स्टूडेंटशिप यूजुअली लास्टेड फॉर 12 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द pupils रेसिडेंस इन टीचर्स हाउस हेल्प द स्टूडेंट्स टू डेवलप डैश द टू डेवलप सोशल कॉन्टैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टूडेंट्स वर बेगिंग आर्म्स फॉर देयर ओन सबसिस्टेंस एंड फॉर डैश एंड फॉर द प्रिसेप्टर और गुरुज। से मैंने निजपाई भिक्षा ग्रहण करुले एवं से गुरु मानी भिक्षा ग्रहण करुले क्यों माने शिष्य माने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट द पीरियड ऑफ वैदिक सिस्टम लैंग्वेज वाज नॉट डेवलप्ड द टीचर मेड हिज pupils लर्न द टेक्स्ट बाय डैश टेक्स्ट बाय रोट लर्निंग रे से मैंने पढ़ुले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिसेप्टर और टीचर ऑक्युपाइड द प्लेस ऑफ द डैश फॉर द स्टूडेंट्स ऑक्युपाई द प्लेस ऑफ द फादर बापा भली से मैंने पोजिशन ग्रहण करुले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन वैदिक पीरियड मच एम्फासिस वाज लेड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग थ्रू डैश थ्रू प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग साधारण जीवन यापन करने और उच्च चिंता करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिसिप्लिन ऑफ डैश वाज कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स इन वैदिक सिस्टम। तार आंसर होची ब्रह्मचर्य और सेलिबेसी। द डिसिप्लिन ऑफ ब्रह्मचर्य और सेलिबेसी वाज कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स इन वैदिक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीपल वर्शिप्ड द गुरु और प्रिसेप्टर एज डैश हिज ओन फादर और एंड गॉड। द आंसर इज हिज ओन फादर एंड गॉड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेथड ऑफ टीचिंग वाज डैश बाय नेचर। वैदिक पीरियड कौन था ना साइकोलॉजिकल थिला मेथड्स ऑफ टीचिंग।
Next question is the post-Vedic period is called as dash. The post-Vedic period is called as the Upanishad period, the age of the Upanishad. Next question is dash system of the education was flourished during the post-Vedic period. को system थिला ना Brahminic system of education थिला. Next question is the ultimate aim of education was achievement of dash. The ultimate aim of education was achievement of salvation, मुख्य प्राप्ति. परवर्ती प्रश्न कौन रही ना द कलेक्शन ऑफ फ्यूएल बाय द स्टूडेंट्स आर कॉल्ड एज डैश. जो फ्यूएल बा जाणी संग्रह करते कौन बोली कहुला कौन ना समिध. से जो काठ संग्रह करते जाणी संग्रह करते कहला समिध. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन एजुकेशनल सेंटर्स ऑफ बुद्धिज्म वेयर डैश. सेंटर ऑफ एजुकेशनल सेंटर किए थिला एजुकेशनल सेंटर किए थिला ना मोनास्ट्री एंड बिहार्स. Monastery and Viharas thila. Next question is the entire educational system was controlled and supervised by dash. The entire educational system was controlled and supervised by the monks. जो साधु माने थिले monk कहले साधु. The next question is the aim of education during Buddhist period was dash. The aim of education during Buddhist period was to prepare for a good life. The next question is the aim of education during Buddhist period was similar to dash education, similar to Vedic education. Buddhist period जहाँ थिला aim of education that is similar to Vedic education. Next question is in Buddhist period instead of emphasizing spiritual education, the stress was laid on dash. Stress was laid on all-round development of personality. The next question is efforts were made to achieve dash through religious education in Buddhist education. The answer was efforts were made to achieve salvation and nirvana through religious education in Buddhist education by Buddhist system. Next question is in Buddhist education system top priority was given to dash. Top priority was given to religious education. Next question is the centers of learning was dash in Buddhist period. The centers of learning was monasteries. इरा मन रखियो पिला माने monasteries. Next question is women education was artists speak in dash education system in Vedic educational system. Next question is the act of admission in Buddhist education was called dash. Called Pabbaja. एथरे करा जाउतला वैदिक पीरियड रे कोन होतला ना ताको कहा जाउतला उपनयन सेरेमनी. उपनयन बोली कहा जाउतला वैदिक पीरियड रे बट बुद्धिस्ट पीरियड रे ताको कहा जाय कोन ना उपनयन. तापरे बुद्धिस्ट पीरियड रे पबजा बोली कहा जाए किंतु वैदिक पीरियड रे उपनयन बोली कहा जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन पबजा मीन्स डैश. पबजा मीन्स प्रिपेरेटरी ऑर्डिनेशन फॉर एजुकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन एट द एज ऑफ डैश द बॉय वुड एंटर द मोनास्ट्री. एट द एज ऑफ 8 years द बॉय कैन एंटर इनटू द मोनास्ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन एट द एज ऑफ 8 years व्हेन द बॉय एंटर्स टू द मोनास्ट्री he was termed as dash. ताको कौन कह जाउतिला ना श्रमण बोली कह जाउतिला. जेतेबेले गोटे पिला 8 वर्ष होतिला जेतेबेले से मोनास्ट्री की एंट्री करुतिला ताको श्रमण नाम रे आख्यायित करा जाउतिला. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन बुद्धिस्ट पीरियड द बॉय हैड टू लिव इन द मोनास्ट्री अंडर द गाइडेंस ऑफ डैश. अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज प्रिसेप्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विदाउट द कंसेंट ऑफ डैश ए बॉय वाज नॉट कंसीडर्ड एलिजिबल फॉर एडमिशन. कहार कनसेंट नबाक पड़ूला ना पेरेंट्स मानकर कनसेंट नबाक पड़ूला. विदाउट द कनसेंट ऑफ ए पेरेंट्स ए बॉय वाज नॉट कंसीडर्ड एलिजिबल फॉर एडमिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन बुद्धिस्ट एजुकेशनल सिस्टम द सेरेमनी फॉर फुल एडमिशन वाज कॉल्ड एज उपसंपद. कॉल्ड एज डैश. तार आंसर हो ना उपसंपद. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर उपसंपद द श्रमण वाज एंजॉयिंग द स्टेटस ऑफ ए डैश. After Upasampad, the Sramana was enjoying the status of a monk. Next question, the preceptor in the Buddhist period was known as dash. The preceptor in the Buddhist period was known as Upadhyaya. आपको मन रखी तो पिला माने भल भाव एगुड़ाक तुम सर्ट क्वेश्चन आसीपे डैश पूरण आसीपे. नेक्स्ट क्वेश्चन होची द बुद्धिस्ट एजुकेशन वाज डैश बाय नेचर. द बुद्धिस्ट एजुकेशन वाज स्पिरिचुअल बाय नेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन in Buddhist period the primary grade education aimed at dash. Aimed at 3 Rs. 3 Rs means
reading, writing, and arithmetic. Next question is the center of learning arts and science in Buddhist education was dash. जो आर्ट्स एंड साइंस पढ़ाऊला कौटी ना तक्षशिला पढ़ा जाऊला. The next question is the knowledge of dash was indispensable for higher education in Buddhist education system. The knowledge of Sanskrit कौन पढ़ाऊला ना संस्कृत बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथिला. नेक्स्ट क्वेश्चन हो डैश इज द फादर ऑफ आयुर्वेद. चरक इज द फादर ऑफ आयुर्वेद. परवर्ती प्रश्न कौन ना द सेंटर ऑफ मेडिकल साइंस वाज डैश. मेडिकल साइंस सेंटर किए थिला ना तक्षशिला थिला. नेक्स्ट क्वेश्चन हो इन बुद्धिस्ट पीरियड मेनली द मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज डैश. इन बुद्धिस्ट पीरियड मेनली द मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज ओरल लाइक वैदिक पीरियड. Next question is the pupils used to learn the content of a different subject matter by dash by rote learning. जेहेतु मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज ओरल रही तेणु रोट लर्निंग को गुरुत्व दि जाऊला. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन बिहार्स एंड मोनास्ट्रेयर्स स्कूल्स डैश मेथड ऑफ लॉजिक वाज अडॉप्टेड. कौ मेथड पढ़ा ना इंडक्टिव मेथड बा हेतु विद्या को अडॉप्ट करा जाउतिला. Next question is dash was provided for widening the mental horizon of the pupils. तार आंसर होची stimulating environment. Stimulating environment was provided for widening the mental horizon of the pupils. Next question is the pupil after admission was placing himself under the supervision of dash, under the supervision of the preceptor or guru. Next question is in Buddhist education system the main ideas of the teacher-taught connection was taken from dash education, taken from Brahminic education. जो उपनिषदिक पीरियड रू Brahminic education रू teacher-taught connection आसी. Next question is the preceptor treats the pupil as dash. The pupil as his own son. The preceptor treats the pupil as his own son. Next question is dash was an ideal before his pupils. The preceptor was an ideal before his pupil. परवर्ती प्रश्न the chief aim of education was dash. The chief aim of education was spread of a Buddhist religion. এটা कौन बुझाऊँ क्वेश्चन ना the chief aim of education was dash during Buddhist period. तार आंसर हो कौन ना spread of a Buddhist religion or attainment of nirvana. दुईटा जाक हो तार chief aim of education of Buddhist period. पिलाने क्वेश्चन आंसर गुड़ भल भाव में मन रख नोट प्रिपेयर करदेव. बछा बछा 125 बा 126 क्वेश्चन ये कराई. तेणु भिडियोटी को स्किप करना. आरंभ शेष पर्यंत भल भाव में देख बारंबार देखिले वीडियो को कौन हम ना तुम मन रही और लिखा पड़ो ना. जो मैंने लिखा चाहूँ भल भाव नोट प्रिपेयर करदेव. जो मैंने लिखापी न चाहूँ बारंबार वीडियोटी को देखिले मन रही. Next question is according to Buddhist religion the world is full of dash. The world is full of sorrows and sufferings. Next question is the aim of life reflected in the aim of dash. The aim of life reflected in the aim of education. Next question is the meaning of the struggle of life was confined to dash. Its answer is metaphysical speculation. Next question is Buddhism had considerable influence upon dash and religious ideals. Its answer is Indian philosophic thought. Buddhism had considerable influence upon Indian philosophic thought and religious ideals. Next question is the Brahminic system was a dash system of education. The Brahminic system of education was a domestic system of education. Next question is in Brahminic period dash was the school. Brahminic period रे स्कूल टा कोठी थिला बा कोठी पढ़ा जाउतला ना द फॉरेस्ट होम ऑफ द गुरु मानकर जो गुरुकुल रही जो फॉरेस्ट होम थिला सेठी ब्राह्मणिक पीरियड रे शिक्षादान करा जाउतला बा फॉरेस्ट होम ऑफ द गुरु होची स्कूल सेतबेलर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बुद्धिस्ट सिस्टम वाज ए डैश सिस्टम ऑफ एजुकेशन ना मोनास्टिक. Next question is in dash the bhikkhus were reside in Buddhist period. भिक्षु मैंने कौट रोते ना मोनास्ट्रीज एंड बिहार्स. आंसर हो कौन ना द मोनास्ट्रीज एंड बिहार्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर डैश एट द बुद्धिस्ट पीरियड. द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर मोनास्ट्रीज एंड बिहार्स
at the Buddhist period. Next question is dash held for the expansion of education by establishing many monasteries, nunneries and edicts throughout his empire. किए करथिले ना एम्परर अशोक हेल्प्ड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन बाय एस्टाब्लिशिंग मेनी मोनास्ट्रीज नॉनरीज एंड एडिक्ट्स थ्रू आउट हिज एम्पायर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश मोनास्ट्रीज वर बिल्ट बाय अशोक. केते माने हाउ मेनी मोनास्ट्रीज वर बिल्ट बाय अशोक ना 500 मोनास्ट्रीज वर बिल्ट बाय अशोक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश वाज ए ग्रेट पैट्रन ऑफ स्कॉलर्स. King Kanishka was a great patron of scholars. Next question is King Kanishka belonged to dash dynasty. The answer is Kushana. King Kanishka belonged to Kushana dynasty. The next question is the main item of expenditure was dash at the Buddhist period. कौन थिला मेन एक्सपेंडिचर ना मेंटेनेंस ऑफ द स्टाफ एंड स्टूडेंट मानकर एवं स्टाफ मानकर मेंटेनेंस होता मुख्य एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट क्वेश्चन होची इन डैश पीरियड वेल एस्टाब्लिश्ड रेगुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर फाउंडेड. इन तार आंसर होची कोन इन बुद्धिस्ट पीरियड. इन बुद्धिस्ट पीरियड वेल एस्टाब्लिश्ड रेगुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर फाउंडेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन बुद्धिस्ट पीरियड डैश एंड डैश एंजॉयड द स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटीज. किए किए करथिले ना तक्षशिला एंड नालंदा enjoyed the status of universities. Next question is in Buddhist educational centers administration was conducted on dash principle. Administration was conducted on democratic principle. Next question is dash was an important center of Brahminical education. Brahminical education रा मुख्य center किए थिला ना तक्षशिला थिला. Next question is Taxsila is meant for dash education. Taxsila is meant for higher education. Next question is higher education was started at the age of dash in Taxsila. Higher education was started at the age of 16 in Taxsila. Next question is princes were going to Taxsila to learn dash. Princes were going to Taxsila to learn Dhanurvidya and law. धनुर्विद्या एंड लॉ पढ़ाई प्रिंसेस माने स्कूल जाऊले. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश वाज द फादर ऑफ व्याकरण. व्याकरणर फादर किए ना पाणिनि. मन रखिथबो पिला माने क्वेश्चन गुडा एटा अलगा इंपोर्टेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे मध्ये आसी पारे क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश वाज एन एक्सपर्ट इन सर्जरी एंड मेडिसिन. किए ना जीवक. जीवक वाज एन एक्सपर्ट इन सर्जरी एंड मेडिसिन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज तक्षशिला वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय डैश कल्चर. तो तार आंसर ये होची तक्षशिला वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक कल्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश वाज द फेमस ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र फेमस ऑथर किए थिले ना कौटिल्य. तापर परवर्ती प्रश्न डैश वाज ए फेमस कल्चरल एंड एजुकेशनल सेंटर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. नॉर्दर्न इंडिया फेमस इंस्टीट्यूशन किए थिला ना नालंदा. तापर परवर्ती प्रश्न नालंदा वाज द बर्थ प्लेस ऑफ डैश. नालंदा वाज द तार आंसर इज नालंदा वाज द बर्थ प्लेस ऑफ सरीपुत्त. सरीपुत्त जोठी जन्मग्रहण करथिले. सरीपुत्त वाज ए फेवरेट डिसाइपल ऑफ डैश. सरीपुत्त वाज ए फेवरेट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड बुद्ध. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट फाउंडर ऑफ नालंदा विहार वाज डैश. Answer is the first founder of Nalanda Vihar was Ashoka. Next question is Nalanda became educationally well established and famous at the beginning of dash century AD. The answer is 4th century AD. Next question is dash was regarded as the pride of Buddhist world. The answer is Nalanda was regarded as the pride of the Buddhist world. The next question is dash was the in charge of test for admission to the Nalanda University. Dwara Pandit. The answer is Dwara Pandit was the in charge of the test for admission to the Nalanda University. Next question is in Nalanda there were dash number of study chambers. In Nalanda there were 300 number of study chambers. Next question is
Dash gave an account of more than 10 water tanks wherein students displayed their aquatic feats. The answer is I. T. Sung gave an account of more than 10 water tanks wherein students displayed their aquatic feats. The next question is, in Nalanda there was a big 9-storied building meant for dash. In Nalanda there was a big 9-storied building meant for library. Next question is, the library was called as dash. The answer is, the library was called as Dharmaganja. Dharmaganja is called as a library. The next question is, Dharmaganja means dash. It means abode of religion. Next question is, Nalanda was the center of dash learning. Nalanda was the center of higher learning. Next question is, Nalanda University, the system of education was almost identical with that of dash. The answer is Brahminical period. Next question is, in Nalanda nearly dash number of lectures were delivered by the teachers daily. The answer is, in Nalanda nearly 100 number of lectures were delivered by the teachers daily. ଦିନକୁ 100ଟା କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଉଥିଲା. The next question is, dash had founded the Bihar of vikramsila. The answer is King Dharmapada. King Dharmapada had founded the Bihar of vikramsila. The next question is, vikramsila was founded on the bank of the dash in Magadha near Nalanda. The answer is Ganga. Vikramsila was founded on the bank of the Ganga in Magadha near Nalanda. The next question is, at the center of the vikramsila there was a temple adorned with the images of dash. The answer is Mohabodhi. At the center of the vikramsila there was a temple adorned with the images of Mohabodhi. The next question is, dash number of temples were there in the campus of vikramsila. କେତେଟା ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ଥିଲା, କେତେଟା ମନ୍ଦିର ରହିଥିଲା ନା? ଦ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ 108. ଦ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍, ଦ ମୋନାଷ୍ଟ୍ରି ୱାଜ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ଡ ବାଇ ଡ୍ୟାସ୍. ଦ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣ ଟିଚର୍ସ. ଦ ମୋନାଷ୍ଟ୍ରି ୱାଜ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ଡ ବାଇ ଦି ଲର୍ଣ୍ଣ ଟିଚର୍ସ. ଦ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍, ବିକ୍ରମଶିଳା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ୱାଜ୍ ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ଆଜ୍ ଦ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ. ଦ ବିକ୍ରମଶିଳା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ୱାଜ୍ ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ଆଜ୍ ଦି Queen of Educational Institutions. The next question is, Vallavi was flourished between dash to dash AD. The answer is 475 AD to 775 AD. The next question is, Vallavi was considered as the rival of dash. The answer is Nalanda. Vallavi was considered as the rival of Nalanda. The next question is, Vallavi was the center for dash Buddhism. The answer is Hinayana. Vallavi was the center for Hinayana Buddhism. The next question is, Vallavi was the center of learning for dash education. Vallavi was the center of learning for higher education. The next question is, dash is the oldest literature in the world. The answer is Veda. Veda is the oldest literature in the world. So ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା ୟୁନିଟ୍ 1ର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଛି. ତେଣୁ ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ. କେଉଁଠୁ ବହିରୁ ସବୁ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ରୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରି କରାଯାଇଛି. ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ ଏବଂ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେବି. PDF ଲିଙ୍କ୍, PDF ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ମଧ୍ୟ ନୋଟ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବ. ନଚେତ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ନା ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରହିଯିବ. ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇଯିବ. ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ. ଯାହାଫଳରେ ଯେତେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମମାନଙ୍କର କୋର୍ ସେମିଷ୍ଟର 4ର କୋର୍ 8, 9 ପେପର କରାଯିବ, 8, 9, 10 କରାଯିବ, ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍.